देखो आज क्लास का ना दोनों रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। उस वाले रिकॉर्डिंग को देख लेना, बट उसमें फिर ऑडियो नहीं आ पाया है ना। मैं एक्चुअली ना मैं अभी ना एकाएक मेरे ध्यान आया, किसी ने मुझे बताया तो था आप में से कि ऑडियो नहीं है उसमें, बट ना मेरे दिमाग से उतर गया था, अभी जस्ट मुझे ध्यान आया। चलो ये आगे की रिकॉर्डिंग में ऑडियो रहेगा, ठीक है। तो आज की डेट पे ना दो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, याद से देख लेना, ठीक है। और ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सुनो एक चीज़ और ना, प्लीज़ ऑल ऑफ यू प्लीज़ सी केयरफुली। आई विल, जब इवनिंग में मैं आपको रिकॉर्डिंग्स मेल करूंगा ना लिंक, तो दो लिंक होगा। पहला होगा जो अभी 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग थी उसकी, और देन आफ्टर जो अभी इसके बाद जो रिकॉर्डिंग होगी दो लिंक होगा। थर्ड लिंक आई विल शेयर ना, एंड प्लीज डू दिस, प्लीज डाउनलोड इट एंड डू दिस एनीवे। सो ओके, लेट्स गो अहेड। So see, this is the regression model in machine learning. Now see, let me explain this. So see, generally what is the proper approach? So in ML na, we have three vertical: supervised learning. I think already discussed with you. Unsupervised learning, and third one is reinforcement learning. So in supervised learning, we have two vertical. One is called regression, and another is called classification. They actually same happen with deep learning also, but the problem, like, even if you either you can say machine learning or deep learning, that is the training based model. So in training based you are using training, different training approach, sometimes you are using adam, sometimes you are using rms probe, gradient descent. But right now we already covered that part. Right now we are trying to go through the statistical model, okay. So this is called, machine learning, data science models. So in regression we saw how can we do the linear regression, how can we do the polynomial regression, and if our model become overfit, so we can use lasso or reduced regression. Any doubt anywhere in this? किसी को किसी तरह का डाउट है इसमें? आप लोगों में से कोई जिसको इसमें डाउट हो, you can ask me. If anyone have any doubt in this, please let me know. Any doubt, guys? No doubt? Say yes, no. No? Or yes? No? Thank you. Thank you. So, okay, that's very simple. Now we will go for a classification models. See, in classification models, we have different weight models like logistic regression, naive Bayes, decision tree, support vector machine, k nearest neighbor. I think k ने मैंने cover कर रखा है already ना आप लोगों के साथ. So these are the different weight models. This is called classification model. This is again the ML data science models, and we have to apply these models. They're really, really important. Okay. Sometimes very, very useful. Sometimes very, very useful. These are okay, because you will get a very, clear information about the data. If you are going to use this. So we are going to use one by one: logistic regression, then naive Bayes, then decision tree, then support vector machine. Canon we already cover. After that, we'll go for a time series models. Time series models are very, very important, but little complex, very difficult to understand. अगर आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है वो, लाइक जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ता है उसको पता नहीं चलता हो क्या रहा है एग्जैक्टली, व्हाई वी आर डूइंग दिस, मतलब एक क्लियरिटी नहीं मिलती है कि एक्चुअली कर क्यों रहे हैं ये चीज़. बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई वी आर डूइंग दिस. ओके, so time series little tough है, but I will try to explain you कि आपको समझ में आए वो चीज़. ठीक है. देखो मॉडल्स तो बहुत सारे हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ अरिमा मॉडल है,
but still I will try to cover Sarima as well. Okay, but different models होते हैं time series के, but time series little complex है, समझने के point of view complex होता है. So I will try to explain you how can we do this. Okay, so let's take a small break, then I will start classification this topic. Okay, this topic, this classification. So what is the time? 3 now. Okay, so let's meet on 11:15. Okay, just go for a tea and coffee, and then we'll start to the classification. Okay, done. Okay, so let's meet on 11:15. Then we'll start the classification. Let's go for tea or coffee. एक मिनट आज वो नहीं आया क्या? Just मिनट ना. या तनिष देर ना. ठीक है, चलो चलो मिलते हैं 11:50 पे. थैंक यू. Hello, hello, audible guys? Okay, so let's start classification part through the ML models. So see, let's discuss first logistic regression. It's very simple actually. If you see the logistic regression now, uh, logistic regression. See, logistic regression is just like a linear regression, same statistical approach. End of the regression will just pass through a non-linearity. This will become the logistic regression. So only one sigmoid here, uh, like you guys already know in neural network you have different non-linearity, but in logistic regression we will only use sigmoid first thing. This is the first important concept, and second is ट्रेनिंग जो होगा वो लर्निंग अप्रोच नहीं होगा, स्टैटिस्टिकल इक्वेशन अप्रोच होगा. एंड थर्ड विल बी जनरली वी अप्लाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर व्हाट बाइनरी डेटा. So general case what happen, your data looks like binary and we apply the logistic regression. Very simple actually. Okay, so let's see how can we do this. See, suppose you make a equation y is equal to w naught plus w1 feature 1 w2 feature 2. Very simple equation, and you pass through this non-linearity, this y become yp. We already know if this is sigmoid non-linearity, the yp plots looks like this. हमने ये ऑलरेडी करके भी देखा है, ये सब प्लॉट्स बना के सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं. वी ऑलरेडी कवर्ड दिस पार्ट विद न्यूरल नेटवर्क, सो विल कवर दिस very quickly. See, so now we can make anywhere one boundary line, maybe here or maybe here, anywhere we can make a boundary, and after the boundary we can say maybe class 1 and this is class 0. So if another new data come, we'll pass through this equation, then we'll pass through the non-linearity. If a yp comes here, we can say it belongs to class 1. If it is here, we can say belong to class 0. You know. So now the important thing is how can we make this boundary. This is really important. Okay. Actually, this depends. It depends on, very important, it depends on data. Suppose you, we can't say कि ये इतने पे होगा, that totally depends on problem, and problem ये बदल सकता है ना. Data, if you change the data, this boundary will change. So we can't say कि एक ही boundary रख सकते हैं और सारे data को उस पर ट्रेन करेंगे, ये possible नहीं है. Because देखो, एक तो whenever we will going to deal with data, especially binary data, most the time your data is imbalance. Very rare chance that you will get a balanced data. Most of the time you got a like imbalanced data most of the time. So then ये तो important हो गया. If your data is imbalance, तो ये तो it's really important है कि नहीं.
say yes, no. So अब देखो यहाँ पे दो अप्रोच है. आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू बट स्टिल आई एम आस्किंग एनी वन कैन लेट मी नो कि अगर हमारा डेटा इम्बैलेंस्ड है, if data is imbalanced, which approach you can apply? I think I already covered two approach. Anyone? Very good. Either we can use sensitive learning or you can use sampling. Sampling में specifically I told you you can use smart. है ना? So this approach we can apply. So we will see this. How can we do all these things before? Like I already covered confusion matrix as well. Correct. So let's try to do this logistic regression. Let's see the data first. So this is data. Oh yeah. So if you write value counts, I think already we know what is this. So देखो यहाँ पे जीरो क्लास 500 है और वन क्लास 268 है. Even I told you generally one is our positive class and zero. Actually minority is our positive class and majority is our negative class. So we already know this. This is not a anyway big deal. So we know this already. Okay. Now go ahead. There is no null value, so yeah, this is the approach. You have to check whether there is some null value in this data or not. So always remember, whenever you try to do such things, check whether there is some null value in your data or not. Okay, so here you can see there is no null value in this data, so we can then there is no need to deal the null value, but I will explain how can deal with null value. Okay, so now go with this. So we saw this x and y. So we break into x and y. So this is my x and this is my y. Okay. So let's split this. After split, this is the train test split. Okay. This is x and this is y. So this is x train, x test, y train, y test. Done. Step size 0.3. That is okay. This is a matrix. No problem. This is logistic regression. See, in sklearn, like linear regression, we have logistic regression. So I am applying this from sklearn.linear model import logistic regression. See this. From sklearn.linear model import logistic regression. So I am calling this. See, I am making the logistic regression model. Solver is linear. Actually, you know, LIB linear के अलावा और भी होते हैं, but generally we use LIB linear solver, and then we fit x train, y train. Now see, this is the intercept W0 and we can get all the coefficient W1, W2, W. That totally depends on data ना. See, देखो अपने पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ टोटल 8 है. So we will get W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 and W8. See this. W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 and W8. So different like, you know, we have W0 for intercept and these are the, because already told no, even in logistic regression we build first equation. We'll build first equation like W0, W1 feature 1, then plus W2 feature 2 like this, and then we'll pass this equation through what? Non-linearity. So we have to do like this. See this. This is intercept and this is the coefficient. Very simple. Now check the score. So this is the score of train. So this is x train, y train. Then we check x test, y test. So this is basically 76%. This is 78%. Very simple. Now we can see y predict. So this is a model dot predict. We just saving in prediction. So ये x test का prediction है, ठीक है, याद रखना. This is the x test prediction. Now see, we are doing the confusion matrix here. See,
So this is a YP train, means this is YP X train का prediction YP train में था और X test का prediction Y predict में था, and we got this confusion matrix. Okay, so I think you all are aware with the confusion matrix. This is, what is this? What is this? Okay, anyone can calculate what is recall and precision for test? Anyone just calculate this? What is the recall, and what is the precision? Please calculate this. Shivam, please don't reply. Okay. So कोई और reply करेगा शिवम के अलावा. Please do this. Calculate this. Okay. Good. So all of you are able to do this, ना? Anyone जो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं है ना? है कि नहीं? Very good, Abhishek. Lakshmi, are you there? Vigneshwar, are you able to do this? I think you are, no? Lakshmi, Lakshmi is not here. Vigneshwar, are you able to do this? Yeah, okay. Thank you, Vigneshwar. So Lakshmi is not there, no? Okay. Meghna is there, no? हाँ ठीक है. Okay. So actually very simple. We already know if you want to calculate the recall. So recall formula will be what? Recall will be true positive, plus what? False negative. And what is precision? True positive divided by true positive plus false positive. Very simple actually. Huh? So if you want to decrease the false negative, we have to increase the recall. So sometimes we want to decrease false negative,
Actually, many times. Sometimes you want to decrease false positive, many times you want to decrease the false negative. So, according to that, we have to work on those part. Anyway, so I already covered this part in neural network. Here in machine learning also, we need this, so that's why I do this. So this is the confusion matrix for test as well. See, say this. There is like here. See, if you write matrices dot confusion matrix, y test, y prediction dot trivial. What is it will give? It will automatically assign true negative, false positive, false negative, true positive. So if you check the value, actually this value is same जो भी यहाँ पे आ रहा होगा टेस्ट वाले केस में, ये वाला ना, इसी केस टेस्ट वाला केस है ये ना, y test y prediction. See, 142 true negative and 142 true negative. Very simple actually. ठीक है. Yeah, this is the classification report. Actually, this report is very important. See what it's saying. It's saying we are getting 78% accuracy. Okay. Saying कि जीरो के लिए जो प्रिसीजन है वो 80% है, रिकॉल 90% है जीरो के लिए, वन के लिए रिकॉल 53% है ना. एंड मे बी यू आर मोरली फोकस ऑन वन बिकॉज दिस इज ऑल माइनॉरिटी एंड ऑलवेज यू आर लुकिंग फॉर माइनॉरिटी नॉट मेजॉरिटी. मेजॉरिटी तो ऐसे भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, है ना. सी द रिकॉल ऑफ दिस इज वेरी लेस, 53% इज नॉट अ. सी दिस इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्रिसीजन स्कोर, जो फॉर्मूला था हमने किया था विदाउट फॉर्मूला डायरेक्टली यू कैन सी from sklearn dot matrix import precision score. So this precision score is also there in sklearn. Okay, just see I'm using sklearn dot matrices import precision score. Let's run it. See, we are able to get the precision score for training and test. Okay, same you want to get recall, we will get the recall as well. See, recall is very less, we already know this, हमने ऊपर भी देखा था. This is almost 56% only. 56% means nothing, है ना. 56% मतलब nothing. F1 score, see this F1 score. F1 score is generally combination of both. Like तो मैंने बताया भी था ना कि actually trade off अगर चाहिए हमें precision और recall के बीच में, so we'll go for what F1 score. If you think हमारे लिए precision भी important है, recall भी important है, that time we can go for F1 score, क्योंकि वो दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ लाता है ना. एक्चुअली दोनों में ना अपोजिट रिलेशन है रिकॉल और प्रिसीजन में. अगर जनरली रिकॉल को बहुत इंक्रीज कर दिया जाए तो प्रिसीजन बहुत कम हो जाएगा, और सेम अगर प्रिसीजन को बहुत इंप्रूव कर दिया जाए, अगर प्रिसीजन को बहुत इंप्रूव तो रिकॉल बहुत कम हो जाएगा. और लेकिन अगर मैं दोनों को चाहता हूँ कि दोनों ठीक ठाक पोजिशन में हो, दैट टाइम विल गो फॉर F1 स्कोर. So F1 skill score will take care of for both. Okay. एक्चुअली देखो यहाँ पे मैंने इसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक ना, F मेजर में भी ना मैं तुम लोग को पढ़ाया तो होगा ही. देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरी फाइल हो गई है. तो ये होता है F1 स्कोर का फॉर्मूला. देखो यहाँ पे F मेजर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई प्रिसीजन इनटू रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल. सो इसका मतलब F1 में दोनों चीज़ें हैं. एक्चुअली ना ये देखो ये हार्मोनिक मीन है. अगर देखो तो याद है ना AP GP SP 3 चीज़ होती थी मैथ में, लिनियर अलजेब्रा 11th या 12th में, तो ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, उसका जो मीन होता था ना वो यही होता था 2AB अपॉन A प्लस B. तो वही है ये टू प्रिसीजन इनटू रिकॉल. तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो फर्स्ट टाइम एकदम एकदम न्यू फ्रेशर होता है ना, जब वो अप्लाई करता है तो वो पूछते हैं कि क्या होता है, तो हार्मोनिक मीन होता है. वेरी सिंपल एक्चुअली. देखो F1 स्कोर डायरेक्टली निकाल सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी देखो F1 जो है ना वो बीटा की जगह पे आया है. देखो यहाँ पर लिखा है F बीटा, ये इंपॉर्टेंट, इसी में तुम्हें दिखाया, ये फाइल खोला मैंने. देखो F बीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रिसीजन मल्टीप्लाई रिकॉल डिवाइडेड बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई रिकॉल प्लस प्रिसीजन.
देखो ये ना ये ब्रैकेट में आएगा रिकॉल प्लस प्रोसीजर, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला को, एक्चुअली ना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ बीटा। देखो ध्यान से अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि एफ बीटा कब क्या रखना है। अगर तुम बहुत ज़्यादा अपना फोकस करना चाहते हो प्रिसीजन पे, तो लिखा है ना मोर वेट ऑन प्रिसीजन लेस वेट ऑन रिकॉल, यू कैन यूज एफ बीटा इजिकल टू 0.5। हम तो जनरली क्या करते हैं सीधे प्रिसीजन पे ही वर्क कर लेते हैं ना, लेकिन ये कह रहा है कि अगर ऐसा है कि आप दोनों पे वेट देना चाहते हो पर ज़्यादा वेट देना चाहते हो प्रिसीजन पे, लेस वेट ऑन रिकॉल, यूज एफ 0.बीटा इक्वल टू 0.5। अगर बैलेंस है ये प्रिसीजन रिकॉल, जब तक बोल रहा था तो एफ वन बीटा, वही जो एफ बीटा में बता रहा था, एक्चुअली ना वन रखो, देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ अगर वन रखोगे तो वन इंटू वन, वन प्लस वन टू हो गया, तो टू मल्टीप्लाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल डिवाइड बाई प्रिसीजन, क्योंकि ये वन है प्रिसीजन प्लस रिकॉल, तो ये हो जाएगा एचपी, है ना। एचपी का जो मीन होता है हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था कि वन, इसको इसलिए इसको F1 बोलते हैं। और F2 मतलब जब लेस वेट ऑन प्रिसीजन मोर वेट ऑन रिकॉल, वी कैन यूज टू हियर एफ बीटा में ही। तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई प्रिसीजन प्लस इंटू रिकॉल डिवाइड बाई 4 इंटू प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये ब्रैकेट में रहेगा प्रिसीजन प्लस रिकॉल, क्योंकि अगर तुम इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फॉर्मूला पूरा बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में होना चाहिए, ऊपर ब्रैकेट जोड़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी सब मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनरली लोग F1 पे ही फोकस रखते हैं क्योंकि वो प्रिसीजन और रिकॉल को अलग अलग कर लेते हैं, बट एक्चुअल फॉर्मूला ये है एफ बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रिसीजन मल्टीप्लाई रिकॉल डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल। अगर तुमने बीटा को वैल्यू 1 रख दिया तो वही हो जाएगा F1 स्कोर, दैट इज 1 स्क्वायर, तो 112 प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइड बाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल। और ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास प्रिसीजन और रिकॉल दोनों बैलेंस चाहिए, ठीक है। अगर रिकॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बीटा इक्वल 2 रखिए, अगर रिकॉल आपको लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यू कैन पुट बीटा इक्वल टू 2, और प्रिसीजन है तो बीटा इक्वल टू 0.5, अगर बैलेंस है तो बीटा इक्वल टू 1। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है, बट जनरली वी अप्लाई F1 फॉर वो, नहीं तो फिर हम रिकॉल और वही लेके काम कर लेते हैं, ठीक। एनीवे, तो आरओसी कर्व, आरओसी का मतलब होता है, देखो ना इसको बोलते हैं रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सी केयरफुली। देखो यहाँ पे देखो ना, मैंने ना जब हम ऊपर प्रिडिक्शन कर रहे थे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, अब मैंने लिखा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट अंडर स्कोर प्रोबेबिलिटी, अब मैं सीधे प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करा रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करा तो ये ऐसे देगा, जैसे बाइनरी क्लास है ना, तो हर डेटा का ऐसे देगा। मान लो पहला डेटा था 3.25 और जो भी होगा फीचर उसका प्रेडिक्शन आएगा कि 0 की प्रोबेबिलिटी मान लो 0.84 है और 1 की प्रोबेबिलिटी पॉइंट में भी जो भी होगा 1 2 जो भी होगा, तो ये ऐसे देना शुरू करेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी कराओगे प्रेडिक्ट ना, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी देगा। देखो यहाँ पहला डेटा के लिए आया तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई, फिर इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ गई, इसकी आ गई, इसकी आ गई, इसकी आ गई, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी आ रहा है हर डेटा के केस में। अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम प्रोजोल्टी प्रोबेबिलिटी देते हैं। अब देखो मैं सिर्फ वन इसमें से लेता हूँ, ये वाला नहीं लेकर के सिर्फ ये लेता हूँ क्योंकि मैं मेजॉरिटी फोकस हूँ। ये 0 की प्रोबेबिलिटी है, ये 1 की प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने 1 वाली प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी हर बार क्या है। ये मैं निकाली प्रोबेबिलिटी, यहाँ से निकल जाएगी। ओ सॉरी, इसको रन नहीं किया क्या? ठीक है, आ गया। अब इसको प्लॉट करो। देखो ये प्लॉट है, इसको बोलते हैं आरोशी प्लॉट। एक्चुअली ना देखो ये ट्रेनिंग के लिए टेस्ट दोनों के लिए कर लिया। ये बहुत ही कमाल का प्लॉट है। तो ये मैक्सिमम 1 है, 1 इसलिए है कि प्रोबेबिलिटी का प्लॉट है। प्रोबेबिलिटी का एरिया मैक्सिमम क्या पॉसिबल है? 1 से अधिक पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ से ना वो जनरली हम बहुत जबरदस्त चीज निकाल सकते हैं। वो क्या होता है जो हम अभी बात कर रहे थे कुछ देर पहले, कि हम ये कैसे निकालेंगे कि बाउंड्री कहाँ लगाए। जो था ना कि अगर हमारा डेटा सेट ऐसे बनेगा तो हम बाउंड्री कहाँ लगाएंगे, हु विल डिसाइड। वी कैन डिसाइड फ्रॉम हियर, डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्री लेकर के हम इसको
प्लॉट कर सकते हैं डिफरेंट बाउंड्री लेकर के, और प्लॉट करने के बाद जिस बाउंड्री पे सबसे अधिक एरिया मिलेगा, ठीक है, वही हमारा बेस्ट मॉडल होगा। एक्चुअली ना ये कंपेयर करने का मॉडल है। कंपेयर मतलब कैसे, देखो जस्ट यू कैन प्लॉट आरओसी प्लॉट्स, ठीक है, तुमने आरओसी प्लॉट किया और मान लो एक प्लॉट ऐसे दिखा तुम्हें और एक प्लॉट ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, दो प्लॉट है पहला और दूसरा, तो यू कैन इजिली से कि वन इज मोर एक्यूरेट देन टू। तो जब भी हमें मॉडल्स कंपेयर करना होता है ना, जनरली वी कैन यूज दिस प्लॉट्स, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्लॉट है, इन प्लॉट से आइडिया लगता है, ठीक है। यू सी एरिया अंडर द कर्व डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट, देखो 69% है, इसका मतलब एक्यूरेसी 69% है, दूसरे वाले पे 74 है, मतलब 70%, मतलब टेस्ट ट्रेनिंग अलग अलग के लिए, ठीक है। तो वी कैन शिफ्ट द बाउंड्रीज एंड वी कैन इंप्रूव द एक्यूरेसी। सो देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ये भी एक तरीका है कि वी कैन चेंज द बाउंड्रीज बदल, बाउंड्री कौन सा, ये वाली बाउंड्री नहीं, ये तो गलत चीज हो गया, जो वो रेयर जो शुरू में था, जो ऐसे हमने बात करी कि जो कि हम लगा रहे हैं एक नॉन लिनियरिटी और वो सिग्मॉइड है, तो वो 0 से 1 के बीच में लाएगा। तो जो तुम बाउंड्री दे रहे हो, जैसे तुमने एक बाउंड्री दिया ये वाला, कि ये मेरी बाउंड्री हो गई, इससे ऊपर जो है वो क्लास 1 है और इसके नीचे क्लास 0 है। तो वेन एवर यू आर गिविंग वन बाउंड्री, ओके, एंड बाउंड्री से तुम डिसाइड कर रहे हो कि इफ समथिंग कम्स हियर वी कैन से क्लास 1, समथिंग कम्स हियर क्लास हियर। तुमने देखा बाउंड यू गेटिंग नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट, बट मेकिंग अनदर बाउंड्री, नाउ मेकिंग अनदर बाउंड्री, अनदर बाउंड्री, अनदर बाउंड्री, और सबको प्लॉट करके देखा जिससे सबसे बेटर बाउंड्री पाएगा वो बाउंड्री यू कैन चूज। समझ में आ गया? So that's why sometimes it's really important. तो किसी को डाउट हो तो पूछना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स चीजें है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, थोड़ा सा है, तो इफ समवन इज फीलिंग एनी डाउट ना प्लीज आस्क, ठीक है। असल में एक्चुअली ना मैं भी बिल्कुल 7 दिन से ना 9 दिन से एक्चुअली गैप था, मतलब मैं पिछले 9 दिन से बिल्कुल मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ भी नहीं, मैं भी मस्त, तुम लोगों को ना सिंपल मशीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लाउड, so your model will disappear again, you have to train the model, otherwise वो work ही नहीं करेगा। So we can save the model, see this, how can we save this? There is a pickle called dump and load. See, I'm using dump we can dump that model, and using load we can load that model. See how can we dump and load this? देखो जो ये मॉडल था, मॉडल फॉर क्लासिफायर डॉट पिकल, देखो इस मॉडल को मैं डंप कर रहा हूँ सीरीज, इस नाम से, इस नाम से कोई भी नाम दे सकते हैं, मान लो हम नाम देते हैं इसका, सी सपोज आई एम गिविंग द नेम मॉडल फॉर मे बी टी, जस्ट अ नेम, लेट्स डू दिस, सो आई डंप इट, नाउ आई वांट टू यूज दिस, जनरली आई कैन यूज दिस, और मैं इसको यूज करके ओपन करता हूँ मे बी मॉडल 12 में, मॉडल 12 में कुछ बना नहीं है, मैंने इसको ओपन कर दिया। अब देखो मैं इसको चाहूँ तो इससे, देखो मैं इससे स्कोर चेक करता हूँ, एंड एबल टू चेक द स्कोर एज वेल, सी। सो नाउ इफ आई ब्रेक दिस फाइल, अगली बार ओपन करूंगा और मैं सीधे केवल ओपन करने की जरूरत है, लोड करने की जरूरत है, सिर्फ ये वाला कमांड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है नहीं। सी आई एम यूजिंग, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, सपोज x इज इक्वल टू 10, आई एम प्रिंट x, क्या आया 10 आया, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट x, देखो 10 आया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिस्टार्टिंग दिस होल करना, सी आई एम रिस्टार्ट दिस, तो कर्नल रिस्टार्ट हो गया। नाउ सपोज आई वांट टू प्रिंट x, सी इट्स सेइंग x इज नॉट डिफाइंड, सो इसका मतलब अगेन आई हैव टू रन दिस, मतलब पूरा अब कुछ भी डिफाइन नहीं, मुझे सब कुछ रन करना पड़ेगा। बट नाउ इफ आई जस्ट run this library load and I want to open this particular things because it's already saved ना, so देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, देखो, और मैं able to predict also, x test डिफाइन नहीं है इसलिए, अब x test तो डिफाइन नहीं है ना, x test ऊपर पड़ा हुआ है ना, बट मॉडल डिफाइन, देखो मॉडल हमारे पास आ गया। अब चूंकि x test तो डेटा सेट के अंदर है ना, डेटा सेट ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसको तो रन करना पड़ेगा ना, बट एनीवे
सो इन दिस वे वी कैन डंप एनी मॉडल एंड अभी मान लो मुझे किसी को मॉडल शेयर करना होता तो मैं ट्रेनिंग थोड़ा ना शेयर करता, सीधे ये वाली फाइल शेयर कर दूंगा, वो ये लोड कर लेगा अपने यहाँ पे और उससे वर्क कर सकता है मॉडल पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ऑल ऑफ यू? अभी आई थिंक 4-5 दिन पहले ही पाइथन ने ना जो वो है ना एनाकोंडा वाले लोगों ने शायद ना वो लॉन्च किया है पाइथन स्क्रिप्ट करके, क्या नाम है उसका, किसी को एक्चुअली मैं उस पे था, लीव पे था, तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था, बट थोड़ा बहुत तो मैंने देखा था उन्होंने कुछ ना नया चीज लॉन्च किया था पाइथन, क्या नाम है उसका, पाइथन स्क्रिप्ट करके है। तुम नया लॉन्च किया उस पता है अब ना, आई डोंट नो वेयर दिस इज, उसका नाम क्या है, पाइथन स्क्रिप्ट कुछ करके नाम है यार, रुको भाई, एक सेकंड ना मैं देख रहा था, मैंने सेव तो किया था कहीं पे बट वो नहीं कर पाया, एक सेकंड बता रहा हूँ। नाउ डेज ना इवन यू कैन जावा स्क्रिप्ट ना वी कैन यूज पाइथन, अभी मतलब बहुत नया है, बहुत वेरी टू न्यू टू से समथिंग ऑन दैट, बट एक मिनट रुको, just a minute. Yeah, name is PyScript, PYS, PyScript. Yeah, see this. Haha, देखो यहाँ पे. So now we can able to run Python on browser. Got this? Just like JavaScript, na? JavaScript you are able to run on browser, na? The same we are able to run PyScript on browser. So important. I have to read it. अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है इसको. I will read today because मैं काफ़ी लीव पे था तो मैं बिल्कुल भी कुछ पढ़, लीव पे होता तो लीव पे होता हूँ, फिर मैं देखता नहीं, बट मैंने ये देखा था कुछ तो है, तो सी दिस बाय स्क्रिप्ट में भी सब कुछ बनेगा। सो अभी तो कमेंट करना है कुछ ठीक नहीं होगा, बट वेरी सून मे बी यू आर मोर फेमिलियर विथ पाई स्क्रिप्ट देन जावा स्क्रिप्ट। अभी कुछ नहीं कर सकता मैं वैसे भी, है ना, कि क्या होगा, बट एनीवे पाई स्क्रिप्ट इज, देखो पाइथन जिधर भी जाता है ना बहुत तेजी से डीप होता है, जैसे व्हेन लॉन्ग बैक जैंगो लॉन्च ना, मतलब जैसे ऐसे हुआ तो किसको पता कि इतनी तेजी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जैंगो आ जाएगा, पीपल आर थिंकिंग ओनली डेटा साइंस, अभी देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पाइथन कितना वो हो गया। सो पाइथन विल बी वेरी एकदम अजब लैंग्वेज होगी, जो बैक एंड पे भी चलेगी, फ्रंट एंड पे भी चलेगी, एआई में भी चलेगी, डेवलपमेंट में भी चलेगी, क्या ऑटोमेशन में भी चलेगा, समटाइम्स में भी आफ्टर सम ईयर्स। अभी तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते, पाइथन विल बी एवरीवेयर जस्ट लाइक, है ना, देखो एनीवे। सो या लेट्स गो अहेड, कहाँ पर थे, हाँ, तो वी आर एबल टू डिप्लॉय द मॉडल, सो वी कैन डिप्लॉय मॉडल, नाउ आई हैव टू रन एवरीथिंग, क्योंकि हमने इसको रन वो कर दिया। Are you getting my point? So we can deploy the model and you can deploy anywhere. Once you have dump your model, you can deploy anywhere, है ना? एक बार आपके पास वो मॉडल आ गया तो आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो कहीं भी, जहां चाहो वहां डिप्लॉय कर सकते हो, है ना? So this, yeah.
ROC curve, yeah, this is ROC curve. You will get ROC curve as well. See, AUC means area under the curve. So called AUC means area under the curve. It is the score basically giving the accuracy basically. Now you can see you can dump it, load it. आप उसको लोड करके यूज कर सकते हो मॉडल को. वेरी सिंपल. और कुछ है? So just trying to see this. Yeah, precision accuracy सब तो ठीक है. I want to check कि compare कराए कि नहीं. ये मिनट ना मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने वो किया है कि नहीं. या सी दिस. देखो यहाँ पे. देखो ये है तुम्हारा जैसे आरओसी कर्व लगाए हैं यहाँ पे. आरओसी कर्व के वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शन के साथ तुम्हारा ये है तुम्हारा क्या टीपीआर ट्रू पॉजिटिव रेट फॉल्स पॉजिटिव रेट और डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड. एक्चुअली ना आरओसी उसी कर्व का मतलब ये होता है ट्रू पॉजिटिव फॉल्स. देखो ये सारे थ्रेशोल्ड है. सी वी हैव ऑल दिस थ्रेशोल्ड. ओके ये थ्रेशोल्ड हैं जिसमें वी कैन डू दिस. वी कैन चेक एनी थ्रेशोल्ड एंड वी कैन अप्लाई दिस. सी let me do this. I work on this or not. इसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या आप लोगों को? मैंडराइज हो गया, वाई प्रेडिक्शन रीसेट ये हो गया हमारा. but we have to give here way ना. See we can do like this also. See we have this y prediction. Okay. अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वो है यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड है. सपोज आई एम टेकिंग दिस थ्रेशोल्ड. एनी थ्रेशोल्ड यू कैन टेक रेंडमली. उसके बाद हम उसको वो करेंगे. सी व्हाट आई एम डूइंग आई कैन डू लाइक दिस आल्सो. मेक इज लाइक yp is equal to np dot where what is this name y predict. So if y predict np dot where if y predict is greater than जो भी threshold देना चाहो. Suppose I want to give 0.5 threshold name, so give 1 otherwise give 0. So let me copy this one, put it here. So this is the prediction. So this is a prediction. Okay, now if you want to check the your accuracy, recall and everything, suppose you are not satisfied with this recall and all, you can change here your what. यहाँ पे आप बदल सकते हैं अपने थ्रेशोल्ड को. सपोज मैं थ्रेशोल्ड और बढ़ाना चाहता हूँ. सपोज आई वांट टू मेक इट 0.8 या 0.7 मे बी. सी व्हाट हैपन. सी रिकॉल इज ऑल्सो अगेन डिक्रीजिंग. इसका मतलब अगर रिकॉल बढ़ाना है तो वी हैव टू डिक्रीज दिस. सो लेट्स डिक्रीज इट मे बी. लेट्स पुट इट 0.3. नाउ सी व्हाट हैपन. See the recall what is saying. Now it's become 82%.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिकॉल इज इंक्रीजिंग, सो वी कैन चेंज दैट थ्रेशोल्ड जो मैंने आप लोगों को बताया कि always you are able to do this, always you are able to change the thresholds. Okay, it's totally depends on it. देखो यहाँ पर optimum threshold निकाल सकते हैं. See this, actually you know we can plot it. प्लॉट करने के बाद ना जो ब्रेक्स है ना, ब्रेक, इन ब्रेक्स पे भी हम ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड निकालने का एक तरीका होता है कि ड्रॉ पॉजिटिव रेट और वॉल्स माइनस फॉल्स पॉजिटिव, एक्चुअली इसी ना ये 1 माइनस फॉल्स पॉजिटिव रेट 2 पॉजिटिव रेट इसमें तुम प्लॉट कर सकते हो, और जहाँ पे ब्रेक हो ना उसको तुम मान सकते हो कि ये मेरा सबसे बेटर थ्रेशोल्ड हो, ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये भी होता है जी मीन, इसको भी पढ़ सकते हो, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में, इससे भी निकाल सकते हो कि एक्चुअल थ्रेशोल्ड क्या है. देखो यहाँ पर आया 0.31, तो बेस्ट थ्रेशोल्ड जो दे रहा है ये 0.31 दे रहा है. अब देखो हमने भी चेक भी किया था ऐसे रेंडमली, तो 0.31 पे ही बेस्ट मिला था हमें. हमने किस पे किया था? 0.3 पे किया था आई थिंक मैंने. 0.31 पे कह रहा है बेस्ट मिल रहा है, तो मेक इट 0.31 थ्रेशोल्ड. देखो 0.31 पे वी आर गेटिंग दिस रिकॉल आर 80%. Are you getting my point? So in this way we can change the recall, sorry, threshold. अगर आप threshold, if you are able to change the threshold, definitely it will change your accuracy and all. थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस ना, पहली बार जब पढ़ रहे हो समझने में कि अरे क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, तो एक बार आप गो थ्रू हो ना, इट विल वेरी इजी एक्चुअली, बट फर्स्ट टाइम इट लुक्स कि यार ये चेंज कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, थ्रेशोल्ड क्यों बदल रहा है ना. एनीवन हु इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई वी आर चेंजिंग दिस, एनीवन? See, if you are reading first time, definitely you will get this such type of problems. कि हो क्यों रहा है, why we are doing this. But very soon, once you are working on such problems, you will come to know why we are doing this. Because हमारे पास कोई अप्रोच, हमारे पास कोई तरीका नहीं कि हम इसको बढ़ा पाए. So we can change the threshold. If we change the threshold, हमारा काम इजी हो जाएगा. क्योंकि एंड ऑफ द डे वी हैव टू इंक्रीज द रिकॉल ना, बस मैं, बट हम ऐसा नहीं कर सकते एवरी टाइम वी जस्ट गो टू द सेंसिटिव लर्निंग एंड वो उसको करने के बाद भी चैलेंज हो सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिव लर्निंग लगाइए या फिर आप डेटा को सैम्पलिंग करिए, मे बी थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट हो, सो यू हैव टू डू सम वर्क ऑन थ्रेशोल्ड्स. आपको थ्रेशोल्ड पे काम करना पड़ेगा एंड यू हैव टू कि यार थ्रेशोल्ड ओके मिल जाए मेरे को, कि मेरा ब्रेक पॉइंट जो है वो मुझे मिल जाए. एनीवन एनी प्रॉब्लम इन इट, प्लीज लेट मी नो. say yes no. Anyone any problem in this? नहीं को दित्या? No? ओके ठीक है, गुड है. सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बट स्टिल आप एक बार गो थ्रू हो ना वीडियोज के साथ, स्टिल एनी वन हैव एनी इशू जस्ट लेट मी नो, सो आई विल एक्सप्लेन अगेन. ओके, बिकॉज थोड़ा सा ये मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, स्पेशली जो ये थ्रेशोल्ड वाला पार्ट है. सो इवन यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड यू विल फाइंड एनी डाउट, जस्ट आस्क टुमारो, सो आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन. ओके, सो क्लास खत्म हो सामने, तो देन जस्ट ट्राई टू गो थ्रू this recording, especially this threshold wale, and if you find any type of problem, any type of issue, just tomorrow let me know so I can explain. Okay, so now let's go for the another classification models. So we have a different models now. We have decision tree, we have support vector machine, we have naive base. I think knn we already discussed, k-nearest neighbor हमने
complete करा है. So we have to discuss all these three decision trees about vector machine and name. But this is also very important. Okay, but generally this is little important. This is important, and this one has some challenge. So I will discuss what is the challenge. Why generally we don't prefer this until unless हमें करना ही पड़े. But generally we try to avoid this one SPM. Okay, why this is I will explain again these things. Okay, so now we will go for these models. So let's do one thing. Let's go for lunch, uh, and then we'll come back and we will start because 10 मिनट में तो हो नहीं पाएगा ये. So just go for lunch and आराम से आइए. Then we will do this. Okay, no problem. So okay, so no problem. Just go for lunch. So 45. No worry, we'll come. We'll meet 2 p.m. Okay, just go and थोड़ा सा little 10-15 मिनट का रेस्ट कर लेना. Then we'll start 2 p.m. Okay, so we'll meet on 2 p.m. Okay, thank you to all of you. Thank you very much.
Hello, hello. गुड आफ्टरनून. कितने लोग हैं? 20. एक दो मिनट वेट कर लेते हैं ना, बाकी लोग भी आ जाए. Hello, hello. Audible, guys? Okay. Okay, so let's just start. Let's start, guys. So let's first start with naive base. See, naive base is very simple. Okay, naive base is going to use naive base, actually base theorem. So I believe you guys already know what is base theorem. Base theorem is like this: probability A given B. Okay, sorry. See this? Probability A given B means what? Means probability B given A multiply probability of A divide probability of B. This is a base theorem, very simple actually. Okay. So how we will do, actually let me explain the math behind this. Okay, and I will go through the sklearn. You guys can run a program through scratch, write a Python program for that. Very simple actually. If anyone not able to do this, let me know. I will either provide you my own file, or I will write that particular code in next class if you are not able to do this. So I will here just explain you through scratch. You have to write a program. If you are not able to do this, just let me know. I will explain how can you do this. And today I will do with sklearn. Okay. So see this. Actual the approach is what? Basically, suppose you have a data, and maybe you have three feature here. One target, maybe data looks like this, and these are feature F1, F2, F3, and this is target. In target, maybe binary class for simplification. Let's go for binary class like 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. This is the data. Okay. Now new features comes here, and you have to predict whether it belongs to 0 or 1. This is your task. You have to build a model, and then model will predict whether this particular data belongs to 0 or 1. That is your task. You have to do this. But first let's try to how can we do this. See, we can use the naive Bayes theorem method. Give me a minute. Okay, so now we have to see how can we do this. Actually, we can write like this: probability
of one given, maybe here that particular, let me write here, maybe that is a, b and c. Okay, so I'm writing probability of a given one, sorry, one given a, b and c, and I also calculate probability of given 0, and then I calculate like a comma b comma c. Okay, or दोनों suppose if I do the calculation, I get here maybe 0.82 and here getting basically maybe 0.18. Definitely it means this one is higher. So if this one is higher, I can say this particular data belongs to one class. Suppose this one greater, maybe this depends on calculation, maybe this one better, then I can say no, this particular class belongs to 0 class. But जितना simple दिख रहा है, it not be like that, because how can we calculate this probability, this very difficult probability? How can we calculate these things? Okay, and even how can we use the data? Like suppose I want to calculate this, whether I useful of data, I will explain each and everything. Just see carefully. See, first see here. Let me write again. If I writing probability of one given a comma b comma c, and here writing probability of 0 given a comma b comma c. Let's explore this one. If you explore this one, it become like this. Probability of a comma b comma c given 1 multiply probability of 1 divide by probability of a comma b comma c. So basically this will be the, yeah. So this will be the formula for this one. If we check for this one, this is like probability of a given b c given 0 multiply probability of 0 divided by probability of a comma b comma c. First of all, just see carefully. Can I remove this particular part? Is it relevant for us? See, is it relevant in our calculation, this part? Because we have to compare. We are not actually focus on the value of this particular thing, this particular data. We are only focused on comparing which is greater. So if you want only compare which is greater, there is no need of this and this. We can just delete this. Just write like this. You can delete like this. Done. Say yes, no. Actually, see carefully. 10 is greater than 3. Definitely. अगर 2 से divide करे, same data से divide करे, so still this relation is same, na? Still this is greater than this one. So that's what I'm saying. There is no need of that one. So we can delete this. Say yes, no. Hmm. Got it or not? मैंने डिमोनेटर हटाया, कोई दिक्कत है एनीवन? ठीक है ना? So there is no need of that, that's why I deleted. So basically now we have to calculate this one. See, still there is a big problem here. Let me explain you what. If you want to calculate this probability
A comma B comma C given 1, it's not a simple probability. Why? Because these are different features. So इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, प्रोबेबिलिटी A given 1, प्रोबेबिलिटी B given 1, प्रोबेबिलिटी C given 1. वी आर नॉट एबल टू राइट दिस, ये लिख नहीं सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी A कॉमा B को हम ऐसे नहीं लिख सकते, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ऐसे नहीं लिख सकते. ओनली वन केस में लिख सकते हैं. एनीवन कोई बता सकता है किस केस में लिख सकते हैं? ओनली वन केस जिसमें प्रोबेबिलिटी ए कॉमा बी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी. एनीवन? कौन सा केस है वो? सी. इफ आई आस्क यू, यू हैव अ फेयर क्वाइन, ओके, एंड जस्ट उसको वो करो एंड 2 टाइम्स, ओके, एंड बोथ टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एनीवन आंसर? अगर तुम जो क्वाइन है उसको ऊपर उछालोगे और दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी फॉर दैट? 2 टाइम्स. मेघना 0 होगी. टू होगी. 2 प्रोबेबिलिटी होती है, एक से अधिक प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. 1/2. सोच के बोलो. 1/4. करेक्ट करेक्ट. 1/4 हो ना. मेघना सो रही हो क्या? सी, फर्स्ट टाइम यू जब क्वाइन को ऊपर करोगे तो एक हेड है और एक टेल है, दो ही तो पॉसिबल इवेंट है, और पूछ रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी. हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 पॉसिबल इवेंट है, 1/2. तो एक बार हुआ, दूसरी बार फिर से वो क्वाइन करोगे हेड एंड टेल, दोनों के 1/2 हुआ. बट अगर ज्वाइन करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा, दैट इज 1/4. ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है. देयर इज नो डिपेंडेंसी कि तुमने पहली बार कॉइन हेड आ गया दूसरी बार भी हेड ही आएगा, या टेल आ गया तो हेड आएगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं है. सो व्हेनेवर देयर इज इंडिपेंडेंट इवेंट you can write like this. So before going to that, let me explain something to you guys. Just to see here. मुझे लगा आप लोगों को पता होगा तो इसलिए मैंने मैं जंप मार दिया. देखिए थोड़ा इधर ध्यान से. सी, देखो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये ऐसे हो सकती है, या तो डिपेंडेंट हो सकती है या तो इंडिपेंडेंट हो सकती है, और या तो एक्सक्लूसिव हो सकती है. अगर तुम्हारा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है ए कॉमा बी और अगर वो इंडिपेंडेंट है, दैट टाइम प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी होगा. इफ दिस इज डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ए कॉमा बी, इट विल बी लाइक प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. इस यहीं से निकलता है बेस थ्योरम. और थर्ड प्रोबेबिलिटी ए कॉमा बी, इफ इट इज एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी विल बी 0. लेट मी एक्सप्लेन यू. सपोज आई एम आस्किंग व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी टू रीच होम, लाइक मे बी एक्स, कोई पर्सन है या कोई भी है, इफ देयर विल बी रेन इन यूएसए. अगर बारिश यूएसए में हो रही है तो दिल्ली में घर पहुंचने में कोई डिपेंडेंसी नहीं है. सो व्हेन देयर इज एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो रिलेशन ए कॉमा बी, इट विल गेट 0. व्हेन देयर इज अ डिपेंडेंसी, इट्स कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. लाइक दिल्ली में बारिश हो गई तो ट्रैफिक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो द ऑलरेडी रेन हो चुकी है दिल्ली में. सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रैफिक इफ देयर ऑलरेडी रेन हो चुका है दिल्ली में? 1 होगा, एकदम प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा. दिल्ली में बारिश हो जाए तो लगना ही है ट्रैफिक, है ना. ऑलरेडी वी नो दिस. सो दैट्स बेसिकली दिस इज कॉल्ड व्हाट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. समथिंग्स हो गया तो उसके बाद, और इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव नहीं है. जैसे क्वाइन वाले केस में एक्सक्लूसिव नहीं है. क्वाइन अगर तुम हटा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम. क्वाइन विल बी देयर, है ना. सो व्हेनेवर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई दिस.
डिपेंडेंसी होगा ऐसा है, एक्सक्लूसिव होगा जीरो होगा. सो नाउ कम हियर. See, if you want to, if we are not able to write this equation to this, because we don't know the relation of ABC, because we don't know what is the understanding of ABC. Maybe it is dependent, maybe exclusive, maybe independent. But there is a naive assumption that ABC, A, B, and C are independent. So this is basically independent. This is basically what? This is basically what? This is basically name assumption. Okay, that's why this theorem called name based theorem. Actually, we are applying Bayes theorem, but here we are doing name assumption. That's why it's become name based model. Okay or not? Got it? So even sometimes in interview, for freshers generally they ask, in name base we are using Bayes theorem. Then why is called name base? Because we are applying one assumption here that my features are independent. If those features are independent, we can say model is name base. Got it? Anyone, any doubt? Just let me know. क्लियर है सभी को? कोई है इसको दिक्कत है? सही यस नो? ठीक है, जिसको भी दिक्कत है यू कैन आस्क. ओके, मेगा हैव यू डाउट? डू यू डाउट? क्लियर? ओके. So anyone, any doubt? Just ask me. Otherwise, let me explain here one thing. See, it's still very difficult to get probability. Suppose we assume these are the independent probability, but how we can calculate this probability? Still, it's not easy, no? How can you calculate this probability? You assume that okay, these are the independent, they are the independent, but how can we calculate this probability? That is very important. See what you are going to do this. See very carefully. First of all, you have to, you know, mark this data for 1. So this is like this data, then this data, then this data, then this data and this data. So these are the data for 1. First of all, आपको ये डेटा बाहर निकालना पड़ेगा. उसके बाद जो डेटा आ गया उसका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा. समझ में आ गई? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस. अब ये जो गॉसियन आया ना, ये किस बात के लिए आया? ऑलरेडी ये इस, अगर ए का F1 की बात कर रहे हैं तो F1 फीचर की बात कर रहे हैं, और ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी बोल रहा है कि ये निकाला ही तब गया है जब 1 है. इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 गिवन 1 है कि नहीं? क्योंकि 1 है तभी तो डेटा निकाला है, और उसका निकाल दिया. अब स्पेसिफिक वैल्यू के लिए निकालना है, तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी ये गॉसियन डेटा है और तुम्हें किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसकी वैल्यू क्या होगी, यू विल गेट द इजिली. सो यू कैन कैलकुलेट. फिर देन यू इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो. अगेन फॉर 0 के लिए
You have to mark the data, and then I already created scratch also using Python, but I believe first try to do this by your own. If you're not able to do this, just let me know. I will explain. I will write program in the class using Python. But right now, let's go for using the sklearn kit. That's very simple. Let's try to see how can we do this using sklearn kit. See, this is the name-based model. Let me go for this. If anyone, okay na, अब लोग try करना. If anyone not able to do this na, just inform me. I will write a Python program for that. But right now, let's focus on a name-base. Sorry, sklearn kit. So this is my data. See, this is the basic data. So I have these are the features and this is the target. See, this is the target. 50 data है. So I broke into X and Y simple train test, and this is the model. From sklearn.naive import Gaussian naive base. Why it's Gaussian? Because we are going to use Gaussian probability. है ना? Anyone? Any doubt? एक एक वर्ड आप समझ में आना चाहिए. Naive base, actually we are using base theorem, but applying naive assumption. That's why it's naive base. Why it's Gaussian? We are going to apply Gaussian probability distribution for calculating probability. That's why it's called Gaussian naive base model. Any doubt, anyone, just let me know. Now you are able to see. It's very simple actually. You'll get the accuracy. You'll get so very simple. Using sklearn is very simple. The most important thing is you have to know why it's happening, how it's happening, and then you can apply sklearn kit. If you want to write a code through scratch, you can write very simple. थोड़ा सा time taking है, but easily you can write the code. और देखो स्क्रैच से डिसीजन ट्री और सपोर्ट वेक्टर मशीन लिखना थोड़ा बड़ा होता है, बट स्टिल यू कैन ट्राई. इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस, आप मुझे बता सकते हो. आई कैन शेयर दोज फाइल्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है सब स्क्रैच से भी. बट हाँ, थोड़ा सा वो जनरली थोड़ा सा टफ होता है उसको लिखना. Okay, so any doubt, anyone? Actually I will share all these files to all of you. Okay, so you can easily go through this. किसी को doubt, anyone, any doubt in this? Simple, very simple, actually very simple. Now let's go for another model, that is support vector machine. That is also really important. Say this.
ठीक है, दिस इज द पॉइंट। ओके, एक काम करिए सभी लोग, पहले तो ये बताइए कि जब मेरे पास दो पॉइंट, ये से दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, कैन एनी वन कैलकुलेट द लाइन इक्वेशन? इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कोई कैलकुलेट कर सकता है? एनी वन ऑफ यू? दो पॉइंट गिवन है तो डिस्टेंस नहीं, आई एम आस्किंग फॉर दिस लाइन इक्वेशन। करेक्ट, वेरी गुड। लाइक हमने रखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, because this line passing through this point, so this point satisfy the line. So if you put x is equal to 0, y is equal to 7, it means c is equal to 7. Here put y is equal to 0, m पता नहीं, x is equal to 6 and c is equal to 7. So m is equal to minus 7 by 6. So this line equation becomes 7 by 6 x, है ना, plus 7. Correct? This is 7 by 6. Okay. 7 upon 6 multiply x plus 7. So this is your y is equal to mx plus c equation. या सही है? अब इस इक्वेशन से मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताइए, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या डिस्टेंस आ रहा है? एनी वन ऑफ यू प्लीज डू दिस।
Hello, done. Guys, you're not able to do this, not able to find this distance. Actually, you're taking more than usual time. That's why I'm asking. Done or not? अंशुल आर यू देयर? हो गया भाई? अंशुल, कितनी आई डिस्टेंस बताओ, ये वाली डिस्टेंस कितनी आई? कैलकुलेट करो ना. 3 3 क्या चीज? करेक्ट. From this 3 comma 1 to this equation, this line equation and this is the, I'm asking for sorted distance. What is sorted distance? Sorted distance is always what? Perpendicular. जब भी shortest distance निकालना हो ना, it's always a perpendicular. So I think you guys are know the equation, formula for the line equation. See, suppose you have a point, maybe a comma b, okay, and there is an equation here, maybe a1 x1 x b1 y plus c is equal to 0, and you want to take the distance. So what will be distance? A1 multiply a. So this is a comma b, na, a1 multiply a plus b1, put y here, b plus c under root a1 square plus b1 square. This is the distance equation. मुझे लगा, yeah, modulo, हाँ, modulo will be there, but don't write here modulus because यहाँ game modulus का ही है, so please don't write modulus here. Okay, please find the value. Just let me know what will be the value. Calculate this. Very good. Minus 1.6 this one, and this one. World, 2.6. Okay. Very good. See, I want to verify something. If I'm going to give you a sentence here, but if you want to verify this, you can do one thing. You can check this distance, and maybe this distance. I'm just going to tell a line. That line will be okay for all this data, but you can verify your own. I'm just giving the line. What is the basic statement here? Whenever you try to find a distance from all these points, just let me clean it. Yeah. ठीक है. So अगर आप, if you want to calculate the distance from this line to this one, it's always positive. If your point is in this side now, you will always find a positive distance. If your points in this side, you always find a negative distance. Just calculate it whenever you have time and verify this. It will be okay, it will be correct. Okay. So this is a approach we are going to do in support vector machine. What is that? Just make a line. If all the point which is upper, you can give one maybe positive class. If any point below this line, we can give the negative class. So we can make a classifier like this. If some next data or maybe prediction data will come, we'll first find the distance.
If distance is positive, we can say this is belong to this class. If distance is negative, we can say this is belonging to this class. Are you getting my point or not? Say yes, no. Guys, are you getting my point? Yes? Okay. Now the problem is, how can we decide this line? How can we decide this line? This is a very good problem actually. See, this is the learning. No, we have to learn it. How can decide the line? So first of all, we can take any line. That's okay. That is okay. But then how can we do like this? See, maybe this is the data, and maybe another data is like this. So we will make a line. We will make a line like this. सो जो ये सबसे नियरेस्ट डेटा हो ना, उसकी दूरी को, जैसे ये नियरेस्ट डेटा है और ये डेटा है, इन डिस्टेंस को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, ये हमारा लर्निंग होगा. सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली द मार्जिन, सपोर्ट वेक्टर मार्जिन्स. सो वी वांट टू इंक्रीज दीज मार्जिन्स. If you want to increase the margin, maybe what happen, if you want to increase only this one, अगर हम इसको केवल बढ़ाए तो हो सकता है लाइन हमारा इधर का सकता है, then you again problem, इधर खिंचा then you again problem. So you have to do like this कि दोनों में वो. अब इसमें क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. ये सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी. अब क्वाड्रेटिक का ऑप्टिमाइज करने के लिए हम सिंपल तरीके से नहीं कर सकते, हमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा. अब लैग्रेंज मल्टीप्लायर मैथ्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है. पहले आपको वो समझना पड़ेगा, फिर वो समझना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी डू. बिकॉज यहाँ पे इतना सिंपल मैथमेटिक्स नहीं हो सकती, बहुत ही डीपर मैथ होगा. स्पेशली लैग्रेंज मल्टीप्लायर आपको आना चाहिए, देन यू आर एबल टू ऑप्टिमाइज दिस. ओके, बट एज अ simple developer, as a like if you don't want to work in a research, like simply you are working as a developer, there is no need to go for that. Directly we understand कैसे होगा and we can go for sklearn kit. Okay, if you still want to learn math behind this, I have already on video on that. मैंने एक वीडियो में पढ़ाया पूरा कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज किया जाए. दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू गाइज. ओके, अनटिल अनलेस जब रिक्वायर्ड हो तो पढ़ सकते हो. अभी रिक्वायर्ड नहीं तो पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी मैथ पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी. मैंने उसे पूरा पढ़ाया है, बट अनटिल वो रिक्वायर्ड नहीं है, सपोज यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट, देन यू कैन रीड इट. वैसे नीड नहीं है. नोबडी विल आस्क मैंने इंटरव्यू कि ये कैसे वर्क करता है, कोई मैंने इतने इंटरव्यू दिए किसी ने पूछा नहीं मुझसे. सो दैट इज नॉट अ नेसेसरी थिंग. ओके, बट या, व्हाट इज नेसेसरी? Necessary point is you have to work hard to understand how these things working, how the models are working like this. But इसके अंदर deeper जाने की जरूरत नहीं है. But still you want to go, I have a separate video on that. You can go and check it. Okay. See, there is another important point here in SPM. That is really important point. Sometimes maybe your data is like this, maybe like this, and you want to classify this data. If you are using logistic regression, very difficult to classify this, but here SBM is very helpful. यहाँ पर SBM हेल्पफुल हो सकता है. वो क्या अब कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर अ कर्नल. ओके, सो मैंने ऐसी एक एजम्पशन बता रहा हूँ, जस्ट अपने आप को ऐसे सोचो जरा. सपोज यू आर इन योर रूम, just try to visualize this. So you are sitting in the room, and what you are going to do this, just see carefully your room. Okay, and see this data. What you are going to do, जो ये जो सर्कल्स है, यू आर पुटिंग दो सर्कल ऑन वी फ्लोर ऑफ योर रूम. लाइक फ्लोर पे आपने पुट कर दिया, and you are like, let me make a room, one room, just a minute. ठीक है,
See, this is a room, and what you are going to do? You put the circles. You put the circles on there, maybe like this. Okay, and then stars को आपने you put it there. Now, if you want to classify this, you can make a hyperplane here. You can just build a hyperplane. Just let me make a hyperplane here. This is your hyperplane. So using this hyperplane, you can classify this data. So first of all, what you do, you just use the kernels to do this. So SPM is ये भी इस तरह के भी काम कर सकता है. That's why SPM is helpful. But what is the disadvantage of SPM? It will take lots of time to train, because lots of maths involved, lots of complexity is very high in SVM, very complex model. That's why it will take lots of time. This is a very very disadvantage. So unless very important, you are not going to use. जब तक कि बहुत ज़रूरत नहीं है, generally we don't apply SVM. See, how can we do this? Let me go for one data here. See, this is the data I'm making x and y. See, this is the plot. देखो ये plot है, and we can make a SPM on this data. So see, I'm making here from sklearn.spm import SPC. SPC means support vector classifier. Kernel is equal to linear, because there is no need of kernel here, no. So if there is no need of kernel, you can just give a linear kernel. No meaning of kernel required here. Unless let's feed the data and predict it. See, you are getting 100% accuracy on this data. Now let's go for another data. See this data. Let me plot this data. See the plot of this data. See, linearly we are not able to build this model. Just let's apply the SPM directly on this data first of all. Sorry. See, this is the data. I want to apply SPM on this data. I just apply SPM. See the accuracy, I'm getting only 55%. Why? Because this data is just, see this. I can't build a classifier line now. So now I have to use kernel here. क्योंकि kernel use करेंगे तो profit हो सकता है. See, I'm using kernel. Yeah, see this. I'm using here kernel RBF. RBF is radial kernel. See this, I'm using radial kernel here. Now let me do feed the data, predict it, and now let's see the accuracy. I'm getting 100% accuracy here. I'm getting 100%. I'm getting 100% accuracy here. Okay. See this. So this is the basically the what SPM model. So whenever your data is like this, we can use a kernel. Using kernel, we can just break the data, and we can make a classifier. That is basically the you can take any kernel. Like generally we take RBF kernel. We can take a polynomial kernel, Gaussian kernel, but most of the time people use RBF kernel, and we'll get the result. But there is a disadvantage of SVM. That is a very huge disadvantage, that it will very costly, because very complex model, it will take lots of time. Got it or not? Okay. Say yes, no. Clear or not? Actually, very less people are active. I know today very less people are active. I don't know why. Maybe बहुत दिनों बाद क्लास हुई है, so काफ़ी कम लोग एक्टिव हैं आज. Really, है ना? After 9 days बाद सब पेपर दे के आए हैं. So maybe you all guys are right now not in this condition to be active. Correct? No problem. ठीक है, कोई बात नहीं. So देखो, this is the the models over. One model is there, that is decision tree. That is I will do tomorrow, because you guys are really not active today. So I am going to share all these files. Okay, I'm going to share all these files. What is your task? Please give some time. Okay, time means really please give some time. Go through all the files. एक बार रात को थोड़ा समय निकाल के, maybe sit 1 hour or 2 hour and go through all the files. Okay.
करेक्ट. प्लीज दिस इज रिक्वेस्ट. ओके, एक बार सारे फाइल के साथ आप लोग गो थ्रू हो जाइए रात को बैठ के 1 घंटा. सो देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल. आप लोग को एमएल मॉडल एकदम क्लियर हो जाएगा. टुमारो विल डू डिसीजन ट्री. ओके, जस्ट गो एंड मे बी थोड़ा सा आप लोग रेस्ट करें. ठीक है, सो टुमारो विल स्टार्ट. ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. ओके, एनी डाउट एनीवेयर एनीवेयर. हाँ, एक बात प्लीज रिमेंबर, मैंने बोला है क्या, डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए प्लीज डू दैट. क्योंकि मैं किसी भी दिन बीच में उसको पढ़ा दूंगा, बिकॉज सिक्वल इज नॉट अ बिग टॉपिक. सो जो भी फंडामेंटल है, एनी डे एनी टाइम आई विल कवर दैट पार्ट. सो प्लीज रेडी फॉर दैट. ओके, या थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you guys. Thank you.